Everyone, and welcome to BYJU'S Exam Prep. Very good evening to everybody, and my name is Alpa Sharma. I hope I'm clearly audible and visible to everyone. बहुत टाइम से एक सेशन नहीं किया आप लोगों के साथ एंड सिंस क्लैट इज ओवर, AILET इज ओवर, बहुत सारे क्वेश्चंस थे. आई एम श्योर अभिमन्यु सर ने अपने सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए होंगे. निवेदिता मैम ने अपने सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए होंगे. बट अभी भी क्योंकि 2023 का साइकिल ओवर नहीं हुआ है, देयर आर अदर एग्जामिनेशंस दैट वी कैन स्टिल अप्लाई फॉर. तो इस सेशन के थ्रू हम वो डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्जामिनेशंस हैं, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां हम अप्लाई कर सकते हैं now that CLAT and AILET is over. Hi Vishal, hi Aditi, very good evening. So और एक चीज और, मेरे पास आज आपके लिए सुपर एक्साइटिंग न्यूज भी है. तो न्यूज मैं शेयर करूंगी विद इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स और फिर बार बार शेयर करूंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इट्स अ सरप्राइज दैट आई हैव फॉर यू. सो सरप्राइज और सब रिवील करने से पहले देखते हैं सेशन में क्या क्या करेंगे. देखो, क्लैट और AILET क्योंकि ये एग्जामिनेशंस हो चुके हैं और इनका साइकिल चेंज होकर दिसंबर में आ चुका था, बट क्योंकि 23 अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बचे हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिनका आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसकी बात करेंगे. हाय ट्रासी, गुड टू सी यू बैक. We will talk about their eligibility criteria, उनके डेट्स की, कब उनके फॉर्म्स आउट होंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है उनका, we'll talk about that. क्या उनकी फीस है, उनका सीट इनटेक ये डिस्कस करेंगे, उनका एग्जाम स्ट्रक्चर, कौन से एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, बिकॉज कुछ एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज कॉलेजेस, देयर इनटेक पैटर्न, देयर एग्जामिनेशन, देयर लास्ट डेट्स, all of that will be covered up. And before I start with the session, we've launched our CLAT 2024 comprehensive program. So if you are somebody who targets CLAT 2024, please speak to our counselors on this specific number. Additionally, you can download our app. वहां पे भी नंबर आपको दिया हुआ होगा, वहां से भी आप कॉल कर सकते हो काउंसलर्स को to know more about the program that we have to offer for you. And here is BLAT की भी बात करेंगे, बिल्कुल BLAT की बात करेंगे, JMI की बात करेंगे, MH-CET की बात करेंगे, सौम्या SLAT की बात करेंगे. ये सब अभी एग्जामिनेशंस बचे हुए हैं ना, तो इनकी बात करेंगे. बट इसके पहले सरप्राइज क्या था मेरा आपके लिए. We are starting with our scholarship test for CLAT 2024. तो 2024 CLAT अगर आप देना चाहते हो, अगर वो आपका टारगेट है, we are here with a scholarship test where you can get up to 90% scholarship depending upon the marks you get in the scholarship test. The test is going to be एक ही विंडो है टेस्ट का, 8 जनवरी 11 AM. रजिस्टर करना है, उसको रजिस्टर करने के लिए लिंक मेरे वीडियो टीम शेयर कर देगा आपके साथ में. रजिस्टर इनटू इट, ये टेस्ट लो, स्कॉलरशिप टेस्ट, और अवेल scholarships in your preparation with us. तो हमको आप जानते ही हो, और if you want to study with us with a discount, here is your scholarship test. Don't miss out on it. टेस्ट जरूर देना, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं बातें करना. सबसे पहले MH-CET की बात करते हैं. पहले क्या होता था, देखो MH-CET में बहुत सारे पार्टिसिपेंट कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेजेस है जो MH-CET के थ्रू एडमिशन लेते हैं, न्यूमरस कॉलेजेस, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के कॉलेजेस. बट ऐसे दो कौन से पायनियर कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन के लिए लोग MH-CET देते हैं, पता है आप लोगों को? ऐसे दो सबसे बड़े कॉलेजेस जो MH-CET के थ्रू एडमिशन लेते हैं. Ma'am, you said that there would be a session. Traffic, the session has already been done. अभिमन्यु सर has already taken the session. इस क्लास के बाद जाना, रिकॉर्डेड वीडियोस में देखना, अभिमन्यु सर का सेशन हो चुका है. And here is the link posted by my video team for your registration to the scholarship test. अब मुझे बताओ, back to my question. हाँ, of course, ILS और GLC, अदिति, absolutely. ये जो दो कॉलेजेस है, एक है GLC और एक है ILS. This is in Mumbai, this is in Pune. ये इंडिया के one of the oldest law colleges हैं. Not oldest in terms of the 5-year integrated program, but oldest in terms of the law degree that they provide. ठीक है. अब पहले क्या होता था, GLC और ILS एडमिशन के लिए ना 12th का परसेंटेज लेते थे, तो रफली अगर 96-97% आ जाती थी लोगों की, तो उनको एडमिशन मिल जाता था GLC और ILS में. पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपना एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया MH-CET के थ्रू. और व्हेन आई से ये ओल्डेस्ट है इन टर्म्स ऑफ लॉ डिग्रीज, 5 साल के LLB के लिए ओल्डेस्ट इसलिए नहीं है बिकॉज थोड़ा सा जीके चेक करती हूँ आप लोगों का. ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसने हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था 5 साल का कॉम्प्रिहेंसिव दिस कॉम्बो प्रोग्राम ऑफ ग्रेजुएशन प्लस LLB इंस्टेड ऑफ 6 ईयर प्रोग्राम? ये 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था,
ये कौन से कॉलेज ने लॉन्च किया था हमारे कंट्री में, याद है आप लोगों को? लेट मी जस्ट चेक इट, देखते हैं आप लोगों का जीके कितना अच्छा है और मेरा कितना अच्छा है। कौन सा कॉलेज था जिसने हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था और फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म आया था कि नहीं नहीं डूड, ये 5 साल का कैसे हो सकता है, ये तो 6 साल का होना चाहिए, इतने छोटे बच्चे लॉ कैसे पढ़ सकते हैं, कॉलेज से पहले उनको ग्रेजुएशन डिग्री मिलनी चाहिए। लेट मी सी हु आंसर्स दिस. It has to be NLS. Yes, yes, Trasik, you're absolutely right. It is NLS. Now, there were some things that weren't answered in that one. Marks discrepancy, nothing could be done about that. Trasik, let me do something. Let me make a short video on that. Yes, Aditi, that's NLU Bangalore को हम NLS बोलते हैं, National Law School Bangalore. So it was NLS that had introduced the 5-year law program. ठीक है, so Trasik, I'll make a short video about discrepancies in the marks and what you can do about that. इसको हम address कर देंगे session में. Then, ma'am, I had not cleared CLAT 23. Attempting again next year is preferable. It's a difficult question, Samanvit. It's a very difficult question. Now that you have asked this, although, you know, because counseling process is still in the way, there are a lot of factors on which this answer is dependent upon. There's a no direct yes, no direct no to it. A lot of factors on which you repeating a year is dependent upon, and we need to have a discussion over all those factors. Can I do an individual session if you should repeat a year or not while addressing all these questions? Would you want me to do that? You know, you'll have to do a self-analysis, but then what are the questions on which this answer is dependent on? It's on multiple things. What's your mindset, your financial stature, your age, your program, what is your alternative, what is your backup option, how good have you been performing in the mocks? A lot of things would decide if attempting CLAT again next year is preferable or not. So if you would want me to have a discussion on that, I might have a session. I would like to have a session with you again. Okay, so please stick with us within this week. I promise you I'm going to have a session with you, or somebody from my team will have a session with you on if you should be repeating a year or not. Let's go back to MH-CET 5-year LLB program. So it's basically Maharashtra's common entrance test. Most of the law schools from Maharashtra take admission through this examination. It's going to be an offline examination. Till now, we don't know, this new variant might create, God forbid, havoc, and CLAT, like CLAT, MH-CET might also go online, but the chances are meager though. Okay, and the medium is English and Marathi. Now, basically, there are roughly 140 institutes that take admission. I'll have an individual session on MH-CET before MH-CET happens कि आपको कौन-कौन से colleges का ranking fill करना है. But out of the 140 colleges, there are 10 good, very good colleges that you can aspire for. The best, of course, being ILS and GLC Mumbai and ILS Pune. These being the best of the colleges. Okay. Apart from that, there are good 10 more colleges that you can aspire for. Ranking fill kar dena while you fill out its form. You have thousands, roughly 10,000 of seats, but then not all colleges are excellent. Now remember, the notification for MH-CET isn't out yet, but roughly the examination is going to be held in the 3rd week of April, because that was जो यही schedule होता था ना कि हम April, May, June ये 3 months में हमारे law entrance examinations होते थे till the time CLAT decided to change the entire year's cycle and फिर AILET followed the suit. लेकिन अभी MH-CET for now we know is going to be happening in the 3rd week of April. The forms are usually going to be out. All जो भी examinations मैं discuss करूंगी ना, इन सबके forms usually January में out हो जाएंगे. ठीक है? So keep a track of our channel. Subscribe to it if you still haven't done that yet. We'll let you know about the forms when they are out. अच्छा, इसका exam pattern क्या होता है? Let's discuss about MH-CET's exam pattern. It is pretty much similar to CLAT's pattern, barring that this examination is not majorly a reading based examination. It is not majorly a reading based examination. The bifurcation of marks is pretty much similar to CLAT, very, very similar to CLAT. You see English, and then you see legal, and then you see the total number of marks. The good part is it does not have a negative marking. Okay, you have +1 for every correct, no negative marking till now. The notification says no negative marking, and after that you just have to finish this examination and you'll be again called according to your marks, according to your rank. Now see, of course there's a hitch. The hitch is that MH-CET, there's a big chunk of reservation for Maharashtra domicile reservation. Okay, so if you are somebody who
has a domicile of Maharashtra, you have a separate reservation. But other kids who are non-Maharashtra kids, you also have a big chance here. I have seen kids, non-Maharashtra kids, non-domicile kids, getting into very, very good colleges. This is one college that you should not miss out on filling out the form. Okay? That's the first college that you should be filling out. Then let's talk about NLAT. Do you know which colleges take admission through NLAT? Do you know about that? अच्छा, एक बात याद रखना, इसमें MH-CET is not majorly a reading based examination. So in English you might get some RCs, it's a non-defined section. You might get some grammar, you might get some vocabulary, but you might not as well. There's no predefined section for English per se in MH-CET. Now let's talk about NLAT. Which is that one college, or which are the colleges that take admission through NLAT? Can you tell me that, everyone? What colleges take admission through NLAT? So there are roughly 4 or 5 campuses of Narsi Monji's colleges that provide us with 5-year integrated LLB program, that is BBA plus LLB or BA plus LLB or BSc plus LLB, whatever you choose. So it's basically Narsi Monji's entrance examination for BA LLB honors or BBA LLB honors, whatever you choose out of. So Narsi Monji has many campuses. One is in Mumbai, the most popular one, the most prestigious one being in Mumbai. We have one in Navi Mumbai, Bengaluru, Indore, Hyderabad, Dhule and Chandigarh. अब देखो ranking इनकी, I would not rate them in the order they are written in, but of course Mumbai being the oldest and the best rated one. So this is one college that you can certainly opt for if you are somebody who aspires to not repeat a year, want to take an admission, and your chances of getting into CLAT is not extremely high, if I can put it into positive words. Just a minute, let me make my torso a little shorter. Image थोड़ा छोटा कर देते हैं. ये हाँ, this looks absolutely fine to me. एक मिनट, या ठीक है. तो इसके रैंकिंग के लिए I'll have a session जब NLAT का एग्जामिनेशन होगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस का फिल करना चाहिए फॉर्म. बट मुंबई, नॉट नवी मुंबई, रिमेंबर मुंबई का नरसी मंजी इज वन ऑफ द बेस्ट रेटेड कॉलेजेस. इसका मिस नहीं करना. अगर ये आपको एडमिशन मिलता है तो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो. ठीक है. इसका एग्जामिनेशन रफली 4th of January से स्टार्ट होता है 31st मई तक. अच्छा, यहाँ देखो इतना बड़ा विंडो क्यों है ये समझो. वन नरसी मंजी ऑलवेज टेक्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन, चाहे वो उनका MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो लॉ एंट्रेंस हो, चाहे वो BBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन और आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो कि आपको कब देना एग्जामिनेशन. सो 4th of January से आपका स्टार्ट हो जाता है एग्जामिनेशन. 31st मई तक आप अपना स्लॉट ले सकते हो. इट्स अ ऑनलाइन एग्जामिनेशन. तो सेंटर आपको अपॉइंट किया जाएगा, आप सेंटर पे जाओगे, वहां जाके आप एग्जामिनेशन दोगे. ठीक है. सो ये आपका इस प्रोसीजर में होगा. आप मल्टीपल टाइम्स एग्जाम ले सकते हो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट यू डू दैट. आप एक ही बार एग्जामिनेशन लो 4th से लेके 31st मई में. आप इनफैक्ट 4th जनवरी से कभी भी ले सकते हो, बिकॉज आप ऑलरेडी उस ग्रूव में हो, क्लैट और एलेट दे चुके हो, प्रिपरेशन आपकी चल रही है. आप इजिली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में फॉर्म फिल आउट कर सकते हो ताकि आपको पता लग जाए कि आप कहां स्टैंड करते हैं. And then you have choices for retakes as well. So online registration start हो जाएगा 1st December, that start हो चुका है, and 21st मई तक क्लोज होगा. कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो. माई सजेशन जल्दी लेना. इसका एग्जाम पैटर्न देखो क्या है. इक्वल वेटेज टू इंग्लिश, जीके, क्वाड, लॉजिकल, लीगल. इक्वल वेटेज टू ऑल ऑफ दीज. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, मैं इतना बोल रही हूँ, सुन रहे हो क्या सब मेरी बात? एक बार हाई भेज दो मुझे. सेंड मी अ हाई एवरीवन. बताओ मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो? कुछ कुछ क्वेश्चन से तो पूछो मुझसे, मैं आंसर करूंगी. सेंड मी हाई एवरीवन. हाउ मेनी ऑफ यू लिसनिंग टू मी? हाय एवरीवन. सुन रहे हो ना? चलो या थैंक यू. ठीक है, आगे चलते हैं. तो इक्वल वेटेज है सबका. एनलैट की बात कर रहे हैं, सबका इक्वल वेटेज है. ये एग्जाम पैटर्न है. विंडोज की जनवरी 1st वीक से खुल जाएगी. यहाँ ट्रैफिक सुन रही है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम पे आते हैं. JMI BA LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इट्स अ वेरी पॉपुलर एग्जामिनेशन. नाम बता रहा है कहाँ एडमिशन के लिए आपका जामिया इस्लामिया में एडमिशन मिलेगा आपको अपने LLB BBA के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर लॉ एग्जामिनेशन के लिए. सो इसके लिए आप JMI BA LLB एग्जामिनेशन देते हो.
ठीक है, एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश में होता है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, सेंटर पे जाना है, पेपर मिलेगा आपको, ओएमआर शीट आपको भरनी है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना है तो जेएमआई बीएलएल भी आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखो, लेट मी शो यू द पेपर पैटर्न। ये है पेपर पैटर्न। यू हैव 30 मार्क्स फॉर लीगल, जीके का 30 मार्क्स है, जनरल स्टडीज 40 मार्क्स का है, लीगल इज 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स 10 मार्क्स। तो अपार्ट फ्रॉम एनलैट कोई भी और, अच्छा सब सुन रहे, राज ट्रासिक, जस्ट अनसर्टेनिटी, you know what, Trasic, Raj, it's one of the most expensive in the list that I'm showing you. It's equivalent to Symbiosis's fees. But then let me tell you, Raj Nandini, even NLUs aren't any cheaper. ठीक है, सो मैम हम 11th क्लास में, अब तो हमें कब क्लैट देना, आप 11th में हो, आपको देखो अंजलि, आपको दिसंबर 2023 में जो क्लैट होगा ना वो आपको देना है, तब आप क्लास 12th में होगे। ठीक है, आई थिंक मार्च में आप क्लास 12th में आ जाओगे, तो दिसंबर 2023 का जो क्लैट होगा ना वो आपके लिए होगा। आपका सेशन 2024 रफली जून तक स्टार्ट होगा आपके एनएलयूज में, बट ये आपका एग्जाम टारगेट ईयर होना चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है मैम, आई एम कंफर्टेबल विद द एनएलयू दैट आई विल गेट, बट आई एम वरीड अबाउट द फीस। देखो, एक बहुत वाइज एडवाइस देती हूँ, काफी पर्सनल स्टेटमेंट दूंगी मैं, बट क्योंकि आप लोगों की एंजाइटी मुझसे देखी नहीं जाती है, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए शायद ये जरूरी है मेरा बोलना। जब when I started pursuing my graduation, so मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफी पुअर थी, तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था ये परसू करना कि मैं कैसे अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस पे करूंगी। ठीक है, सो आई टुक अप अ लोन, आई टुक अप एन एजुकेशन लोन फॉर माई BBA and then my MBA. I'm an MBA, FYI. I took an education loan for both of them. But then पता है क्या? After a year, I could repay the entire loan. और एक बात मैंने ये रियलाइज करी कि इनिशियली ये एंजाइटी होती है कि हम क्या रीपे कर पाएंगे ये चीज, हमको क्या ये लोन लेना चाहिए। बट आप अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस रखते ना अपनी कैपेबिलिटी पे कि चलो कोई बात नहीं, डू नहीं निकला एनएलयू, किसी भी कॉलेज या ब्रिलियंट एनएलयू नहीं निकला, किसी भी कॉलेज में जाऊंगा या जाऊंगी, अगर मुझे लोन लेके भी करना पड़ा तो मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं वो लोन विद इन 2 to 3 years रीपे कर सकता हूँ। आई एम नो in no rush to get married. I mean, you should think of that, Rasik. And I can easily repay that in 2 to 3 years, depending upon the college that I've got. So I could repay that in a year. I'm sure you can do that too. Okay. Dhanushma, it should be out any time. Before the new year, the counseling would start. At least the first list would start. Okay, Dhanushma? So stick with it. What's your score, Dhanushma? I'd like to know that, my child. So if you have confidence in yourself, little wise advice, just go for it. देख लिया पेपर पैटर्न जामिया मिलिया इस्लामिया का? ठीक है, तो जेएमआई एलएलबी के लिए दिस इज योर पेपर पैटर्न। इंग्लिश में ही एग्जामिनेशन होगा, नो सेक्शनल टाइमिंग, +1 फॉर एवरी करेक्ट, नेगेटिव मार्किंग इसमें जरूर है 0.25। अब बात करते हैं एसलैट की। सो एसलैट के भी बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे नरसिम्हा के अभी आपने देखे थे, बहुत सारे कैंपसेस हैं। सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस ऑफ कोर्स बिकम्स द पुणे वन। हाँ, ये हो सकता है कि आपके मॉम डैड थोड़े से स्केप्टिकल हो जाए, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट SLAT is your examination for you to get into your Symbiosis colleges, different campuses that they have. SLS के बहुत सारे campuses है, पुणे में है, नोएडा में है, हैदराबाद में है, and it's going to be, just a minute, it's going to be an online computer paper based paper. इसके बारे में एक अच्छी चीज है, मैं आपको बताती हूँ क्या। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। मैम हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए मैम, प्लीज बता दीजिए। अंजलि, इसके लिए 2024 टारगेट के लिए हमने सेशंस लिए हैं, मेरी टीम के बाकी फैकल्टीज ने सेशंस लिए हैं। आप प्लीज एक तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर जब सब्सक्राइब करोगे तब आपको सारे वीडियोस दिखेंगे। ठीक है, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए अलग सेशन हुआ है बच्चे, ये सेशन उसको टारगेट नहीं कर रहा। अच्छा,
Oh, Dhanushma, that is excellent. Wow, you deserve an applause. I'm very proud of you. Okay, Praveen says, ma'am, AIR OBC 3100 rank. Oh, it's a little difficult, bache. It's a little difficult. Considering the number of seats we have for OBCs, it's a tiny bit difficult. But then let's hope for the best. एक बार first counseling list को आने दो बच्चे, ठीक है? अविनाश, इसका फॉर्म ये जो भी एग्जामिनेशंस में डिस्कस कर रही हूँ ना, MH-CET, JMI, SLAT, NLAT, ये सारे एग्जामिनेशंस का फॉर्म जनवरी में आउट हो जाएगा. SLAT का फॉर्म भी जनवरी में आउट हो जाएगा. जैसे ही फॉर्म आउट होता है, यू विल नो दैट. ठीक है. और इसका अच्छा एक इंपॉर्टेंट इसका फी स्ट्रक्चर. यस, तो क्योंकि मैंने नरसिम्हा जी का भी फी स्ट्रक्चर सिमिलर बताया था, एक बार देख लीजिए इसका फी स्ट्रक्चर. हियर इट इज. यस, सो टेंटेटिव डेट्स दिसंबर 15th, जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा. एंड एग्जामिनेशन डेट दो विंडोज में होगी, May 6th, May 14th. ऑलमोस्ट ये सारे एग्जामिनेशन अप्रैल टू जून के बीच में वाइंड अप हो जाएंगे, जो भी एग्जामिनेशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. You're welcome, Dhanushma. Is it worth it to take a loan for Symbiosis, or we can consider BHU? Depends on which Symbiosis you're getting, Raj. I'll be honest here. Symbiosis is many centers, okay? Ma'am, score 25, All India rank 25,000. SC 1500, no domicile, ma'am, NLA मिल सकता है. Chances है तुम्हें थोड़े bottom NLA उसके, ठीक है? But है chances. Ma'am, what about Kerala law entrance? Joseph, that's a separate examination, but then I'll tell you something very honestly, Joseph. They're almost all of the state universities are taking their own entrance examination. But I haven't included all the state universities because none of the state universities compete or are able to compete with the kind of degrees we have from NLUs or Symbiosis, because Symbiosis certainly will be able to get you good placement, at least the Pune one. Then we have JMI. So these state universities, they aren't as great as getting into JMI or BHU or Symbiosis, or for example NMAT, Narasimhanji's colleges. So isliye I'm not discussing the individual state level examinations. If you belong to a specific state, Joseph, I would recommend you certainly sit for those state examinations as well, but then don't expect anything great out of the state and state universities. They wouldn't get you strong placements for sure. They will certainly give you good education. They'll have excellent teachers, but they wouldn't bring colleges for placement. That is one hitch that's always there with every state university, be it Kerala or Rajasthan or any other state university we talk about. Okay. Janvi, that is another examination, not a very highly ranked college, but then it's a mediocre one. Okay, you can sit for that as well. Army Institute of Law, Mohali, Rishika, if you, okay, let me talk about that as well since the question is up here. Mohali ke liye, Army Institute of Law has very, very few seats for non-defense army background kids. If you have a background, if your parents, either of the parents have served army, this college is very, very good. But if you do not have a defense background, you have very few seats. You have to compete with thousands of kids for those seats, and that's why I haven't included Army Law School here. Okay. Ma'am did not do well in CLAT and appearing in 12th right now. Okay. Don't want to take her drop. So which exam next should I? This is what I'm discussing here. Both. Rishika, my funda is absolutely clear. You go to a wedding function, है ना? You have, at one place you have a buffet. You can choose, you want to eat Rajasthani or Punjabi or Chinese or Indonesian, what kind of cuisine you would want to eat. And then you choose, okay, I'm going to eat Indonesian here. Your heart is full. But then you go to a wedding and there's only Rajasthani there. And you don't like Rajasthani food, but then that's the only choice that you have. You have to eat Rajasthani food. You understand my point? Fill out as many forms as possible for you so that you have a variety to choose out of. Then you can decide later on, okay, these are the 3 colleges I have. Best is this is where I should go, instead of filling out only one form and getting into it
So buffet is always better. Hi मैम, विदाउट कोचिंग के क्लैट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अंजलि, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये याद रखना. I have a defense background, ma'am. What about this placement? Do you have any? Of course, yes, it's good. It's easier for you to get directly into defense if that is what you are asking. But corporates, no, they majorly take admission through NLUs. Let me make it very, very clear. If you want to get into defense directly, yes, this is one college you should get into. But if you're talking of corporates, they do not take a lot of placements through Army Law School. And please do a video about the process of counseling. Yes, Dhanushma, we've already done that. Abhimanyu sir has already taken a session on that. Dhanushma, please watch that. Let's talk about Symbiosis Law Entrance Test and the participating colleges here. We have Pune Deemed University, we have Noida, Hyderabad, and Nagpur. So we have these total four colleges. This, of course, being the best of all four. I wouldn't highly recommend this campus though, but then this is absolutely great. You can go for that as well. Okay, and before I start continuing talking about any other examination, we have Anika Sehgal, All India rank 18 in AILET. She also got through one of very prestigious colleges in CLAT. We're still collating the results for CLAT. We'll be out with the banner very, very soon. And everyone who's watching me live, we are launching our CLAT 2024 scholarship test. So if you are somebody who's sitting for CLAT 2024, that's going to happen in December 2023. If this is what you are going to give, you cannot miss out on the scholarship test. You can avail up to 90% scholarship. Register. There's only one window, 8th of January, 11 a.m. Sit for the test. Avail these scholarships. Do not be late here. Okay. So, hi Vishal. 18K rank, EWS. Yes, Jharkhand में chance है Aditi. Yes, absolutely है. Ma'am, how to prepare for LSAT exam from now? Mohit, बहुत similar pattern है CLAT से. ज़्यादा कुछ difference ही नहीं है. वैसे ही passages आएंगे, उसी लेंथ के passages आएंगे. LSAT previous paper सारे available है online. Solve करो उनको. Easily prepare कर सकते हो. अगर CLAT के लिए prepare किया, LSAT is no different. ठीक है? तो SLAT कहाँ? अच्छा हाँ, एक बात और. SLAT में there's another selection procedure. मत भूलना. SLAT has WAT as well. And हम अपने YouTube चैनल पे WAT पे भी सेशंस लेंगे. तो SLAT सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें एक रिटन एबिलिटी टेस्ट भी होता है. ये क्या होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, SLAT हो जाने दो एक बार, इसके भी सेशंस ले लेंगे. तो subscribe करना चैनल को so that you don't miss out on all that. And then you have personal interviews as well. So combination of 50% of your written examination, 20% of WAT and 30% of your personal interview. उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा Symbiosis colleges में. So it's a combination of all that. Remember ये इसीलिए SLAT is different from all other examinations. Exam structure, you have logical reasoning, 12 मार्क्स का. अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है एक सेक्शन 12 मार्क्स का. इक्वल वेटेज है, बहुत छोटा सा पेपर होता है, 60 मिनट्स का, और ऑनलाइन पेपर होता है. नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ आरसी आते हैं. गुड पार्ट इज दैट जैसे LSAT और CLAT और AILET मेजरली अब आरसीज आ गए हैं, तो यहाँ भी सिर्फ आरसीज ही आएंगे. इट्स गुड दैट ऑलमोस्ट ऑल एग्जामिनेशंस आर टेकिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स giving you RCs. We've launched our CLAT 2024 comprehensive course. If you wish to know more about the program, call our counselors on this number or download our app. वहाँ पे भी number है, वहाँ से call कर सकते हो counselors को. So this was about the colleges that you can apply for after CLAT and AILET is done. If you have any doubts, you can comment under my video. I shall try my best to reply to all of you. And if you think this session was helpful to you, please say a thank you to me. I'll be glad with that as well. Do not leave the class without hitting the like button and click on the bell icon, that is subscribing to our channel. You can also follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download our app on Google Play. That's going to be all for today, everyone. I shall see you again very, very soon. God bless all of you. Bye, everyone.